Good evening to all of you. This audible, visible, all clear? All clear? समस्ते सुनी पारुचंदी? समस्ते सुनी पारुचंदी? Very good evening, Pooja. आज समस्ते जानिले आज समस्ते जॉइन करछन काली कोड थिले वेरी फ्यू जॉइन यस्टरडे ओनली आज डिस्कशन करबा हमें GS3 और एसए पेपर GS3 एंड एसए आज डिस्कस करबा ठीक अछि GS3 रे हमर कोन आसे सब्जेक्ट कोन अछि GS3 रे GS3 रे सब्जेक्ट ला इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट देन internal security, biodiversity, science, technology. Sarv Saksham 2 नहीं sorry नहीं तो Sarv Saksham 2 Sarv Saksham sorry नहीं don't worry तले कौन कहली GS3 रे कौन कौन आसुची सब्जेक्ट कौन कौन रहिला हमर GS3 सबटू मेजर सब्जेक्ट ला इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट then internal security biodiversity जोड़ा तुमर कोन environment topic then biodiversity पर the next one is disaster management science and technology बड़का क्लास DMP अपलोड हैनी ओके ऑल राइट I'll reach your message I'll make your message reachable to the team they will handle don't worry तल देखिबा क्वेश्चन कोन कहूची केतरा क्वेश्चन डिस्कस करबा हैना क्वेश्चन देखियो कि नहीं क्वेश्चन कहूची व्हाट डू यू मीन बाय डच डिजीज how do the authors use this concept to explain the Indian economy in their book a sixth of humanity Dutch disease कौन what is Dutch disease देखो क्वेश्चन रे ही क्वेश्चन इटसेल्फ शोज द आंसर मु कहि ऑलरेडी स्ट्रक्चर बतैछि आंसर रो प्रथमे कहितली गोटे इंट्रोडक्शन लिखिबो इंट्रोडक्शन रे डेफिनेशन लिखि पारो किछि कीवर्ड्स लिखि पारो इंट्रोडक्शन रे कोन कहले किछि कीवर्ड्स लिखि पारो किछि एक्सप्लेनेशन लिखि पारो हैला गुड इंट्रोडक्शन आ कोन इंट्रोडक्शन रे लिखिबो बा किछि कोटेशन नु स्टार्ट हे पारे मे बी स्टार्टेड फ्रॉम सम कोटेशन हैला तापर आसीबो बॉडी पार्ट को बॉडी पार्ट डिस्कस करिवो बॉडी पार्ट रे एनालिसिस रहिबा दरकार कहितली एनालिसिस प्रोज एंड कॉन्स ई सब लिखिबे तापर आसीबे कंक्लूजन टा टिके फ्यूचरिस्टिक हेतिबा दरकार कंक्लूजन टा कोन हो दरकार ना कंक्लूजन टा फ्यूचरिस्टिक हो दरकार दिस इज द अप्रोच प्लीज चेक दिस इज द अप्रोच एई अप्रोच रे एटा रहिबा दरकार फर्स्ट ला डच डिजीज नो डच डिजीज कोन एबो एक्सप्लेन करिवो ना दिस इज इकोनॉमिक फेनोमेना वेयर बूम इज वंस नाउ देखो एटी इंट्रोडक्शन रहि गला एटा जहा लिखुची एटा कोन एटा ला इंट्रोडक्शन पूरा नाउ डेफिनेशन मु कहितली इंट्रोडक्शन रे यू हैव टू राइट द डेफिनेशन यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज डच डिजीज तो एटी डिफाइन करो व्हाट इज डच डिजीज हला बूम इन वन सेक्टर लाइक नेचुरल रिसोर्स लीड्स टू करेंसी अप्रिसिएशन और हायर डोमेस्टिक प्राइस मेकिंग अदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग अनकॉम्पिटिटिव सो गोटे जगह रे कोन होती ना बढ़ी जाउची प्राइस बढ़ी जाउची आ तार इंपैक्ट पड़ुची आ गोटे सेक्टर ऊपर कोन कहल तार इंपैक्ट कोड पड़ुची तार इंपैक्ट पड़ुची आ गोटे सेक्टर ऊपर एमति लिखियो देन डेफिनेशन दिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नेदरलैंड्स 1960s नेचुरल गैस डिस्कवरी हैला ओरिजिन ऊपर गोटे दिन लाइन लिखले देन एप्लीकेशन टू इंडिया से कुछ सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी इंडिपेंडेंट इंडिया's डेवलपमेंट by Devesh Kapoor and Arvind Subramanian
एमाने the authors they adapt Dutch disease to explain India's stagnant manufacturing share in GDP. Unlike China and South Korea, China और South Korea रे manufacturing टा अधिक होउची. चाइना साउथ कोरिया मैन्युफैक्चरिंग बढ़ुची बट एटी देखुचे आमे कोन ना एटी मैन्युफैक्चरिंग रिड्यूस होउची कोन कहले एटी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ुतिला एटी कोन होउची ना एई पर्टिकुलर सेक्टर रे आमे देखुचे मैन्युफैक्चरिंग टा रिड्यूस होउची मैन्युफैक्चरिंग माने शेयर मैन्युफैक्चरिंग को शेयर रिड्यूस होउची तो या ऊपर लिखियो एटी एप्लीकेशन टू इंडिया केमती मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करि परिबा हाई पब्लिक सेक्टर वेजेस एक्टेड एज अ बूम ड्रॉइंग लेबर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग रेजिंग इकोनॉमी वाइड वेजेस ए सब पॉइंट गुडा के एप्लीकेशन ने लिखि पारिबे बुझियला क्लियर ना एटी मु डिस्कस पाठ पढौनी मु एटी कहूची कि क्वेश्चन ना आंसर रे हमें कोन लिखिबा को पॉइंट एग्जामिनर खोजिबे तुम खाता रे को पॉइंट रहिले मार्क पाइबो ना डेफिनेशन रहबा दरकार तार एप्लीकेशन पार्ट रहबा दरकार कोन कहले डेफिनेशन रहबा दरकार इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे प्लस तार एप्लीकेशन पार्ट रहबा दरकार क्लियर नेक्स्ट discuss evolution of India's biodiversity legal framework and critically examine the key changes and impact of NBA regulation 2025. Now current affair based question subject होउची कोन environment बा biodiversity रो आसिला environment बा biodiversity rules बा laws rules regulations chapter रो आसिला एटी question कोन कहला टिके देखंतु समस्ते हां आईडिया आसी जो राइटिंग भाई एग्जैक्ट कौन कौन को पॉइंट को लेके लिखिया दरकार मु से कथा को गोटे ब्रॉड आइडिया आसीबा दरकार लिखिया में एनवायरनमेंट बायोडायवर्सिटी रो क्वेश्चन बुझियला क्वेश्चन को डिस्कस इन द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया's biodiversity legal framework critically examine the key changes and impact of NBA regulation 2025 फर्स्ट लिखिबो इंडिया रो ताले एटी कोन लिखिबो मते को इंट्रोडक्शन में कोन लिखिबो ए क्वेश्चन दिस इज द क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में कोन लिखिबो हमें को पॉइंट को हमें एटी एम्फासिस दवा इन इंट्रोडक्शन इंट्रो पार्ट रे को पॉइंट को एम्फासिस दिया जिवा उचित समस्त कोन को पॉइंट को एम्फासिस दिया जिवो इंट्रोडक्शन कौन लिखा जी वर्डी ने कुछ इवोल्यूशन ऑफ इंडिया's biodiversity legal framework एटी फर्स्ट लिखिबो इंडिया रा biodiversity legal framework केमती ओरिजिनेट हला ना इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द colonial era forest law to comprehensive system aligned with global conventions emphasizing conservation sustainable use equitable benefit sharing ए सब पॉइंट ऊपर एटी लिखा जियो बुझिला these are the point which needs to be highlighted then modern framework एटी कोन को मॉडर्न फ्रेमवर्क इंडिया रैटिफाइड द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1994 लीडिंग टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट तो बीडी एक्ट पदे 2002 रे आसिला इट क्रिएटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज नाउ ये गुडा कोन दीज आर हाइलाइट्स ऑफ द एक्ट ये एक्ट रे हमें जहा पढो वेरी गुड समस्त पाखा पाखी ठीक कहउछन इंडिया रा बायोडाइवर्सिटी लीगल फ्रेमवर्क लिखिबा बायोडाइवर्सिटी पर लिखिबा नाउ दिस इज फ्रेमवर्क ये कोन एटी लिखिले एटी डिस्कस करले हमें समरी ऑफ द एक्ट और द हाइलाइट्स ऑफ द एक्ट इट डिस्कस इट हाइलाइट्स ऑफ एक्ट ये एक्ट रा हाइलाइट्स गुडा कटी डिस्कस इट बुझेला मो कथा कोन मेंशन होइचे देन एनबीए रेगुलेशन 2025 की चेंजेस कौन चेंजेस आथिला बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्स and associated knowledge and fair equitable benefit sharing regulation 2025 it replaced 2014 guidelines with turnover based kete na 0.2% 0.4% 50 to 250 crore 0.6 to 50 crore now these are the hints related to the regulation je current affair पढिथिबो ताको गुडा बुझा पडिजो कि कौन चेंजेस हेछि व्हाट आर द रिसेंट चेंजेस से चेंज गुडा का हमको लिखियाला अछि तो लिखिला परे
এই পয়েন্ট গুড়া লিখিলা পরে আমি ক্রিটিকাল एग्जामिनेशन करिवा बा विल गो फॉर एनालिसिस आमे क्रिटिकल एग्जामिनेशन करिवा और विल गो फॉर एनालिसिस सेठी करिवो so these regulations they enhance traceability in pharma biotech cosmetics empowering BMC for community and aligning CBD COP16 ये सब पॉइंट गुडा लिखियो नाउ सी जेतेबेला आमे गोटे आंसर लिखुचे एटा होलिस्टिक वे रे लिखिया दरकार होलिस्टिक माने सब एस्पेक्ट गुडा को एटी मेंशन होवा दरकार सब लाइन गुडा को सब लाइन लेंथ गुडा को मेंशन होवा दरकार नाउ यू डोंट नीड टू क्लैरिफाई एवरीथिंग यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग सब गुडा को एक्सप्लेन करियार आवश्यकता नहीं सब गुडा को ऊपर क्लैरिटी दबार आवश्यकता नहीं रादर कौन करियार अछि दी कौन लिखियार अछि को पॉइंट लिखियार अछि ना किछि इंपोर्टेंट पॉइंट को माने सबु जिनसर इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा को कनेक्ट करके लिखियार अछि एडी कोई आंसर समस्त लिख परथिबे केमति क्रिटिक्स माने कोन आर्ग्यू करचंती एला एटी कोन होउची हैला ए पॉइंट गुडा को सब लिखा जो क्रिटिकल एग्जामिनेशन ना बुझी गेला ताले यार आंसर रे कोन लिखा हो जते कि लिखी चे एते कि लिखले भी सफिशिएंट या बाद भी और रेस्ट ऑफ द थिंग्स आल्सो यू कैन राइट यू क्लियर बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज स्पेस डेब्रिस व्हाट आर इट्स चैलेंजेस एंड रिड्रेसल हाउ डिड इट अफेक्ट चाइनाज स्पेसक्राफ्ट रिसेंटली क्वेश्चन पढंतु ठीक क्वेश्चन सबले 3-4 थर पढिबे एनी क्वेश्चन प्रीलिम्स पई हो मेंस पई हो सबले 3-4 थर पढिबे क्वेश्चन केते कहली क्वेश्चन को सबले 3-4 थर पढिबे ठीक क्वेश्चन पढ़ तापर मु कहबी नेक्स्ट पॉइंट कहबी क्वेश्चन पढ़ व्हाट इज स्पेस डेब्रिस ता माने फर्स्ट पैराग्राफ रे कोन लिखा हो नाउ यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज स्पेस डेब्रिस तापर चैलेंजेस कोन और रिड्रेसल कोन तापर नेक्स्ट पैराग्राफ लिखियो हाउ डिड इट अफेक्ट चाइना स्पेसक्राफ्ट रिसेंट नाउ दिस इज हाउ यू हैव टू राइट ये डायरेक्ट क्वेश्चन तीन थाक करी से क्वेश्चन दे देला तो तुम आंसर टा भी तीन थाक रे लिखि दो तीनटा फेज रे क्वेश्चन देला तुम आंसर भी तीनटा फेज रे लिखि दो स्पेस डेब्रिस consist of defunct human-made objects in orbit, including old satellite, rocket stages, collision fragments, tiny particles like paint flakes, solidified liquids from fuel dumps. Key challenges कौन ना जो गुड़ा को operational spacecraft अच्छी ये सेथिरे बाड़े ही जाई पारे. So even 1 centimeter object hits with a bullet-like force. है ना space रे अच्छी उन्हें एडी छोटा object भी जहाँ पड़ी वो सेठी सेटा आसी गोटे बुलेट भलिया गोटे गुली भलिया माड़ हम ता गुली भलिया माड़ तार इंपैक्ट पड़िबो कि नहीं केस्लर सिंड्रोम कहा जाए केस्लर सिंड्रोम बोलिया को कहा जाए ना ये ऑर्बिट को अनयूजेबल कर दो तो ट्रैकिंग ओवर 36000 ऑब्जेक्ट्स लार्जर देन 10 सेंटीमीटर स्ट्रेंथ ग्लोबल राडार रे देखिबा सो माइक्रो डेब्रिस इवेंट्स डिटेक्शन ताको डिटेक्ट करिवेन माइक्रो डेब्रिस गुडा को डिटेक्ट करिवे नाही now mitigation कौन केमती करबे ना प्री लॉन्च गाइडलाइंस 25 ईयर डी ऑर्बिट रूल बाय आईएडीसी यूएन तो याको कौन करि परबा नो डेफिनेटली दिस इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द स्पेसक्राफ्ट्स ये स्पेसक्राफ्ट पई एटा रहिबाटा एटी स्पेस ऑर्बिट रहिबाटा एटी बेटर ना तो ये कुछ एडा सब उठै दबो हटेओ तो ता पई रूल रेगुलेशन आवश्यकता अछि ता पई रूल रेगुलेशन आवश्यकता अछि रिसेंट चाइना इंपैक्ट जनवरी 2026 रे एबेर क्वेश्चन देखो माइक्रोमेटेरियल और डेब्रिस फ्रैगमेंट पंक्चर्ड अ प्रोपेलेंट टैंक ऑन चाइनाज सिजियान 21 सैटेलाइट सर्विस टेस्ट जेतो हला लो अर्थ ऑर्बिट रे ये चाइना या पर चीन चाइना रो सिजियान ऊपर इंपैक्ट पकेला सो माइनर ऑर्बिटल एडजस्टमेंट हेगला ना मिशन लॉस एनिमी वंस अ मिशन लॉस होई जिवो जो पर्पस रे जाईची गोटे स्पेसक्राफ्ट यदि से मिशन लॉस हुए देन इट विल बी ह्यूज इकोनॉमिक लॉस टू द कंट्री इट मिशन लॉस है नहीं इट ओनली माइनर ऑर्बिटल एडजस्टमेंट कौन मिल ओनली माइनर ऑर्बिटल एडजस्टमेंट वाज देयर बुझियला लिखि जो ये क्वेश्चन स्पेसक्राफ्ट ऊपर बस स्पेस डेब्रिस ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन एनालाइज इकोनॉमीज ऑफ लाइवस्टॉक रियरिंग एज अ बिग पोटेंशियल फॉर जनरेटिंग नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया discuss the measures undertaken by the government of Odisha to promote this sector क्वेश्चन पढ़न तीन थर कहि तीन थर क्वेश्चन पढ़िबे
क्वेश्चन पढ़ो 3 थर जो पढ़ा क्लास सब क्लास हम व्यस्त होनी जहाँ जहाँ तुम टॉपिक सिलेबस अच्छी सब पढ़ा जो मैंने बैच रे अच्छा से बैच रे सब कवर करा चल क्वेश्चन कौन कहूँ देख क्वेश्चन दीटा फेज रे पचारला फर्स्ट एनालाइज इकोनॉमीज ऑफ लाइवस्टॉक रियरिंग एज अ बिग पोटेंशियल फॉर जनरेटिंग नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया सेकंड वन इज डिस्कस सम मेजर्स अंडरटेकन बाय द ओडिशा गवर्नमेंट टू प्रमोट दिस सेक्टर तो ये दीटा जाक पॉइंट ऊपर एटी डिस्कस करियो दीटा जाक पॉइंट एटी लिखिबे प्रॉपर्ली तो फर्स्ट एनालाइज करिवे इकोनॉमीज ऑफ लाइवस्टॉक रियरिंग एज अ बिग पोटेंशियल फॉर जनरेटिंग नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया पे ना व्हाट इज द एटी कोन लिखियो ना रिलेवेंस ऑफ लाइवस्टॉक रो रिलेवेंस कोइ सब इकोनॉमिक्स देखला जते डाटा देबे सेते बढ़िया नोटी डाटा देबे कोन लाइवस्टॉक जीडीपी शेयर कितना 4.9% 4.9% इंडिया लाइवस्टॉक जीडीपी शेयर सो लाइवस्टॉक रियरिंग कौन करूची ना या पाखरे इकोनॉमिक पोटेंशियल कौन नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिया पई low land needs value chains like dairy processing meat marketing economic potential 8.8% of india's population can be employed here now, backward linkage feed veterinary ये सब पॉइंट गुड़ा फॉरवर्ड लिंकेज लाइक प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट ना देखो इंट्रोडक्शन पॉइंट को देखो ये सब डिस्कस होगा ऑलमोस्ट ऑल इंपोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस्ड हियर देख पारथि देखो ऑलमोस्ट ऑल इंपोर्टेंट पॉइंट्स आर डिस्कस्ड हियर इंट्रोडक्शन कौन कहते इंट्रोडक्शन शुड बी मिरर टू योर आंसर सब इंपोर्टेंट पॉइंट एठी डिस्कस होवा दरकार तापर ओडिशा ऊपर लिखबे स्पेसिफिकली ओडिशा रो ट्राइबल रूरल एरिया केमती माइग्रेशन रिड्यूस करि पारे ना यार बेनिफिट कोन माइग्रेशन कमी जो व्हेन पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और स्पेशली रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कैन बी रिड्यूस्ड यस और नो स्पेशली को माइग्रेशन ना रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कैन बी रिड्यूस्ड काहे कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होची कोन पाए ना रूरल ले काम मिलुनी तो सेत पे से अर्बन एरिया को माइग्रेट कर देउछंती कि सेटा को रिड्यूस करियो कोच कोन कोच ना सेटा को रिड्यूस करियो कोच बुझिला so odisha रे अछि कोन ना ओडिशा रे देयर इज अ गवर्नमेंट मेजर्स लाइक ओडिशा रे डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हस्बेंडरी वेटरनरी सर्विस to the run subsidies for small scale goat semi commercial pig farming sheep broiler units under the state then मुख्यमंत्री कामधेनु योजना एटा ना सुनिथियो समस्ते मुख्यमंत्री कामधेनु योजना इट केते आउटले केते 1423 crore over 5 years to double milk from 65 to 130 lakh liters daily via cattle rearing buffalo development commercial dairy subsidy हैला 2024-25 रे 2727 completions 24.5 crore disbursed integrated livestock development program ना देखो गोटे क्वेश्चन ने आंसर लिखला बेले मु कहि केते गुडे स्कीम रो ना लिखियो पड़छ ना अनेक स्कीम रो ना हमको लिखियो पड़छ हां कि नहीं एटी अनेक गुडे स्कीम रो ना हमको लिखियो पड़छ कोन पई स्कीम ना लिखियो पड़छ ना दैट स्ट्रेंथेन्स योर आंसर कोन करछ ना इट स्ट्रेंथेन्स योर ये तुम आंसर टा को स्ट्रांग करूछ अधिक रो अधिक then discuss the mandate and role of special operation group SOG रो रोल गुडा को लेखो of Odisha police in combating left-wing extremist problem in Odisha. Has the group achieved its objective? Explain. Question टिके देखिले कौन कहूची SOG रो रोल मागुची डायरेक्टली कौन कहूची SOG रो रोल कौन स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप रो रोल कौन प्लस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ये कम्बैट करिछि कि नाही प्रॉपर्ली कौन कहूची लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ये कम्बैट करिछि कि नाही प्रॉपर्ली हैज द ग्रुप अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव ये ऑब्जेक्टिव अचीव करछि कि नहीं एक्सप्लेन करो so SOG this is an allied counter insurgency unit यार definition लिखो what is SOG you have to start from what is SOG कौन SOG it is a कौन definition special operation group एटा पुलिस रा गोटे ब्रांच allied counter insurgency units raised in August 2004
specifically to combat left-wing extremism or Naxalism in the state's forested and tribal dominated regions like Kandhamal, Koraput, Malkangiri. So what are the roles of SOG? What are the primary mandates to neutralize Maoist insurgency? जोटा हम रेड कॉरिडोर जोन भीतर ओडिशा जो जो जगह जाउची सो रेड कॉरिडोर जोन बा नक्सल अफेक्टेड एरिया गुडा करे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिया होची आर बेसिक फंक्शन सो इट विल गो फॉर प्रोएक्टिव ऑपरेशंस इंटेलिजेंस लेड अटैक बा गरिला वारफेयर करि परिबो ये इट कैन कॉम्बैट कम्बिंग पेट्रोलिंग एरिया डोमिनेशन हाई रिस्क टैक्टिकल इंटरवेंशंस दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स एई काम ये करि परिबो बा एइति पई ही ये अछि तो केते कमांडो ना 18000 रु 3000 कमांडोस ऑर्गेनाइज्ड इन सेल्फ रिलिएंट टीम्स ऑफ 20 to 25 ओडिशा स्पेशल आर्म्ड पुलिस OSAP इंडियन रिजर्व बैटालियंस वाया रिगरस इंटरनल सिलेक्शन एज लिमिट 35 वर्ष एटी जानिथियो ट्रेनिंग कोडी अछि चंदकारा ट्रेनिंग नहीं जंगल वारफेयर केमति करिवे वेपन हैंडलिंग केमति करिवे फिजिकल एंड्योरेंस बुझी बुझी ना नहीं ना कोब्रा एटा होची बैटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन CRPF रो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रो या सहित मिसिकी काम करियो सो SOG रो फंक्शन लिखि देला प्रथम SOG रो फंक्शन कोन SOG रो फंक्शन लिखि सारिला परे अचीवमेंट और असेसमेंट लिखियो SOG रो कोन लिखियो अचीवमेंट और असेसमेंट ऑफ SOG significantly how it contributed to Odisha's LWE decline violence incidents violence केमति drop from 1091 रू under 100 by 2025 इस पॉइंट लिखियो MHA मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स डाटा दबा पड़ियो एठी की सक्सेस इंक्लूड न्यूट्रलाइजिंग टॉप माओइस्ट लीडर 2026 रू 16 रू 24 भीतर हैला रेड कॉरिडोर एरिया को it has not fully eradicated LW residual threats persist interstate border रे जोड़ा छत्तीसगढ़ बॉर्डर एटू एमान को अटैक कले से खाली बॉर्डर चेंज कर देबे फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट कोन कहली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट तो पुलिस आ अटैक करि परिबोनी कोन एटी एटी आ पुलिस अटैक करि परिबो नाही नेक्स्ट क्वेश्चन ये गला को टॉपिक रो क्वेश्चन थिला सेटा इंटरनल सिक्योरिटी रो क्वेश्चन थिला को टॉपिक रो क्वेश्चन टॉपिक थिला इंटरनल सिक्योरिटी बुझेला Then question ethanol blending in petrol is considered one of the promising solutions for reducing dependency on fossil fuels in transport sector. Discuss scientific and economic justification for ethanol blending in petrol, its major benefits, key challenges, evaluate alternative clean transport solutions and compare their long-term sustainability with ethanol blending. देखो क्वेश्चन पढ़ो तीन चार थर क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन ये पढ़िए कौन कुछ क्वेश्चन ऑन इथानॉल ब्लेंडिंग ताले को टॉपिक रो क्वेश्चन एनवायरनमेंट कोइ पारो बा साइंस टेक कोइ पारो तुम अच्छा तो व्हाट इज इथानॉल ब्लेंडिंग फास्ट ताको डिफाइन करिवो प्रथमे कोन कहितली जेतल व्हेनेवर यू आर राइटिंग यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ डेफिनेशन गोटे डेफिनेशन नु स्टार्ट करिवो कहितली ना बारंबार ताले कोन डेफिनेशन ना इथानॉल ब्लेंडिंग नु स्टार्ट करे इथानॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल mixes bio derived ethanol with gasoline to reduce fossil fuel reliance in transport leveraging India's agricultural surplus for cleaner energy. Scientifically and economically justified, it offers viable decarbonization while boosting rural income. हाँ कि नहीं? A point scientific justification for ethanol. Ethanol like C2H5OH. It came to it is fermentation of sugarcane or grains. It has higher octane rating. Enables better combustion efficiency, reduced engine knocking. तो या ऊपर यार साइंटिफिक अप्रोच गुडा को प्रथम लिखियो ना साइंटिफिक अप्रोच लिखि साला पर देन इकोनॉमिक एस्पेक्ट लिखियो पड़ियो
कौन लिखा पड़ो ये ना इकोनॉमिक एस्पेक्ट इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन कौन बिकॉज इंडिया इंपोर्ट्स जदि आम देखा जिते आम टोटल एनर्जी कंजप्शन होची एनर्जी कंजप्शन रो 87% क्रूड ऑयल आम कंज्यूम कौन करछे इंपोर्ट करछे 20% ब्लेंडिंग E20 अचीव्ड के 2025-26 डिस्प्लेस 5 करोड़ लीटर पेट्रोल पर ईयर के 500 करोड़ लीटर पेट्रोल पर ईयर को ये डिस्प्लेस कर इंपोर्टेंट तो केते सेव कले आम जी इथानल क्रिएट हो गला इंडिया रे सेतिक आम इंपोर्ट करवानी सो इंपोर्ट न करिया कारण आम सेव कले केते ना लक्षे कोटी टंका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1.06 लाख करोड़ तो सिंपली जदि 1 लाख करोड़ रो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आम एटी सेव कल so generating 87,000 crore farmers income from feed stocks है creating 7.5 lakh jobs in rural processing and transport major benefits energy security ये oil import reduce करछि by 5 to 7% at E20 scale environmental gain कौन होउछि लिखिबे रूरल इकोनॉमी को बेनिफिट करना सरप्लस क्रॉप बेनिफिट जोटा सरप्लस क्रॉप है जोटा नष्ट होतला पूर्वरु ताकू एटी यूटिलाइज करा जाय परियो कौन हम ना तार ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पार है की चैलेंजेस फीडस्टॉक कंपटीशन की चैलेंजेस फीडस्टॉक कंपटीशन ओके now it a comparative evaluation ethanol blending excels short term for India leveraging 50 million ton per year surplus biomass quick rollout rural equity है rural equity ना these are the benefits ना ये डाटा देछि भरी भरी के डाटा दिया कौन पे डाटा दिया ना सी ई डाटा गुड़ाक आमको लिखार अच्छे पॉइंट जी डाटा मन रखिपर से डाटा ये लिखार अच्छे बुझीगला नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी ऑफ इंडिया स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कैपेसिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर क्वेश्चन पचारुछि व्हाट एक्सपेंशन हैज बीन प्लान्ड एंड व्हाट इज द फ्यूचर आउटलुक इन दिस रिगार्ड एक्सप्लेन क्वेश्चन देखो क्वेश्चन टिके पढ़न समस्त क्वेश्चन 2-3 थर पढ़ discuss present infrastructure and capacity of India's strategic petroleum reserve. What expansion has been planned and what is the future outlook in this regard? Buffering? No buffering from my side. You please recheck your connection. Please recheck your connection. कौन कहूँ ना डिस्कस प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी ऑफ इंडिया स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व India's strategic petroleum reserve provide emergency crude oil storage to buffer against supply disruption managed by Indian Strategic Petroleum Reserve Limited. Current infrastructure and capacity कितने 3 underground rock caverns store 5.33 million metric tons. Visakhapatnam रे 1.33, Mangalore रे 1.5, Padur 2.5 है तो ए पॉइंट गुड़ा सब लिखो facilities integrate commercial operations with robust security, blending units, dispatch infrastructure. ये सब पॉइंट लिखा हुआ बुझीला कौन कौन पॉइंट ना डाटा देछि सब डाटा तो मन रहबनी जेतिकी डाटा मन रहइबो
नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखो एटा गला एसओजी गला इथेनॉल ब्लेंडिंग क्वेश्चन गला एसपीआर गला then do you think that a small average size land holding is an impediment to productivity growth in Indian agriculture? Justify your answer. Do you think that small average size land holding this is an impediment to productivity growth in Indian agriculture? Justify your answer. को कौन हो आपण भाबुचंती जे भारतीय कृषि रे उत्पादकता वृद्धि पाई क्षुद्र और हाराहारी जमी धारण एक प्रतिबंधक निजर उत्तर प्रतिपादन कर स्मॉल लैंड होल्डिंग रे प्रॉब्लम कोन ना टॉपिक कोन टॉपिक है एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग ऊपर मु बहुत क्लास करी टॉपिक है लैंड होल्डिंग एग्रीकल्चर टॉपिक है कोन ना लैंड होल्डिंग कौन हम कौन लिखो तुम व्हाट इज योर व्यू कम लैंड होल्डिंग पे प्रोडक्शन कमुची की कम लैंड होल्डिंग पे प्रोडक्शन कमुची की कौन कहली कम लैंड होल्डिंग पे आंसर कौन लिखो ना यस लिखिबो एटी यस प्रोडक्शन कमुची सो स्मॉल एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज इंपेडिमेंट में कौन लिखिबो ना यस दिस इज एन इंपेडिमेंट जस्टिफाई कहीं की स्मॉल लैंड होल्डिंग हेले कौन हो ना कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हेई पारुनी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हेई पारु नाही हैला प्रोडक्शन कम होची लो क्वांटिटी प्रोडक्शन लो क्वांटिटी प्रोडक्शन होची कम प्रोडक्शन होची कम प्रोडक्शन हेले फार्मर डिस्ट्रेस मध्य क्रिएट होची फार्मर्स डिस्ट्रेस क्रिएट होची हैला फार्मर्स डिस्ट्रेस होची माइग्रेशन क्रिएट होची माइग्रेशन को ना रूरल टू अर्बन माइग्रेशन क्रिएट होची बुझेला ताले कौन लिखिबो क्वेश्चन कोची जस्टिफाई योर आंसर को कारण मानक पई ना लो प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू स्मॉल लैंड होल्डिंग अधिक रहिले सिना प्रोडक्शन अधिक हो तो लैंड होल्डिंग ही कम तो ये लिख पारिबो स्मॉल मार्जिनल लैंड होल्डर्स बा स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स मानकर नंबर केते परसेंटेज केते थी लिखि पारिबे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स मानकर नंबर एठी लिखि पारिबे
then evaluate effectiveness of strategic environmental assessment in promoting sustainability in India's infrastructure mega projects. How can institutional framework be strengthened for integrated environmental planning and decision making? देखो ये टॉपिक कौन सब्जेक्ट है तुम एनवायरमेंट रो आछि कौन हम क्वेश्चन कौन एनवायरमेंट रो आसला क्वेश्चन ताले कौन लिखा हो evaluate effectiveness of strategic environmental assessment in promoting sustainability in India's infrastructure mega projects. Now बड़ा infrastructural project रे ताले keyword कौन first find out the keyword. Keyword है strategic environmental assessment. Strategic environmental assessment गोटे keyword है ना आउट है sustainability in India's infrastructural mega projects. आउट कौन कहला आउट है sustainability in India's infrastructural mega projects. कौन ना इंडियास इंफ्रास्ट्रक्चरल मेगा प्रोजेक्ट दीटा है कीवर्ड ये तो ये क्वेश्चन कहूँ कि एनवायरमेंटल असेसमेंट बिना जदि आम करूचे कौन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करूचे तार इंपैक्ट कौन पड़ुछि से कहूँ कैन द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बी स्ट्रेंथेन फॉर इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल प्लानिंग कैन इट बी स्ट्रेंथेन फॉर इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल प्लानिंग यस लिखियो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टाको एटा कोन हो यस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टाको हमको स्ट्रेंथन करिया पड़ियो से रिलेटेड लॉ आनिया पड़ियो वी हैव टू गिव इंपोर्टेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट यू हैव टू गिव इंपोर्टेंस टू एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अनुसार करिया दरकार सो बुझे लागे नहीं सस्टेनेबल कोन कहली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अनुसार करिया दरकार जेमती इंपैक्ट नेगेटिव इंपैक्ट ता कम पड़ुथियो कोन होतो ना जेमती नेगेटिव इंपैक्ट ता कम पड़ुथियो नेक्स्ट India's border regions face unique security challenge due to their geographical, socio-economic, political condition. Discuss security threats in India's border areas with reference to organized crime and terrorism. Now, India border area प्रथमे जो गोटे मैप काटिके देखै देबो को एरिया बॉर्डर एरिया रे आसला कहा सहित को कंट्री सहित बॉर्डर करूची ना इंडिया पाकिस्तान इंडो चाइना बॉर्डर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर इंडो म्यांमार बॉर्डर इंडो श्रीलंका बॉर्डर अफगानिस्तान लिखि पार प्रॉब्लम कौन ये बॉर्डर एरिया गुड़ाक इंटरनल सिक्यूरिटी क्वेश्चन ये बॉर्डर एरिया गुड़ाक प्रॉब्लम कौन कौन लिखा प्रॉब्लम फर्स्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स कौन प्रॉब्लम कौन बॉर्डर एरिया रे प्रॉब्लम कौन ना बॉर्डर एरिया रे प्रॉब्लम होची मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम हैला तुमरो जो सेटा कौन स्मगलिंग 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 ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स आर्म्स एंड एम्युनिशंस इगुडा सब स्मगलिंग होची देन इनफिल्ट्रेशन टा बेसिकली चाइना और पाकिस्तान नु इनफिल्ट्रेशन हो टेररिज्म एक्टिविटी क्रिएट हो एफआईसीएन इट क्रिएट्स टेररिज्म कौन क्रिएट करछि ना ये टेररिज्म क्रिएट करछि हैला सो ऑर्गेनाइज क्राइम कौन कौन ऑर्गेनाइज क्राइम रे कहली एगुडा सब ऑर्गेनाइज क्राइम स्मगलिंग ड्रग्स आर्म्स ट्रैफिकिंग फेक इंडियन करेंसी नोट्स ये सब गुडा कहउछन ऑर्गेनाइज क्राइम तो हमको लिखियार अछि ऑर्गेनाइज क्राइम कौन क्रिएट होछि प्लस टेररिज्म कौन क्रिएट होछि कौन कहली ऑर्गेनाइज क्राइम कौन क्रिएट होछि एवं टेररिज्म कौन क्रिएट होछि दीटा जाक जिंस हमको एठी लिखिया को पड़ियो
बुझीला दीटा जाक एस्पेक्ट हमको एटी लिखिया को पड़ियो लिखि हबो डिस्कस द सिक्योरिटी थ्रेट्स इंडिया इज फेसिंग बॉर्डर एरिया रे कौन कौन सिक्योरिटी आ गोटे पॉइंट एटी ऐड करि परिबे बॉर्डर एरिया रे काहे की सिक्योरिटी थ्रेट फेस करछि व्हाई सिक्योरिटी थ्रेट व्हाई थ्रेट काहे की थ्रेट फेस करछि एटी भी लिखिया को पड़ियो थ्रेट काहे की फेस करछि बिकॉज ऑफ पोरस बॉर्डर इनफिल्ट्रेशन अधिक हो जाउछि इनफिल्ट्रेशन मोर टेररिज्म एक्टिविटी गुडा अधिक देखा मिलूँ इनफिल्ट्रेशन अधिक देखा मिलूँ बुझेगा कि नहीं बुझेगा ये सब कौन कौन वाई थ्रेट कौन को कारण मान थ्रेट ना सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन रे एग्जांपल दे परिबे कौन पॉलिटिकल कंडीशन जोटा तुम देखुछ सेपारेटिस्ट मूवमेंट कोडी जम्मू काश्मीर रे पॉलिटिकल कंडीशन इकोनॉमिक कंडीशन जदि हम देखिबा इकोनॉमिक कंडीशन ने हला पॉवर्टी इन बांग्लादेश बांग्लादेश रे पॉवर्टी पई कोन होउची ना माइग्रेशन होउची बढ़ुची माइग्रेशन इंक्रीज होउची एवं से माने आछुचंदी एठी कि ये पई तुमरो सेटा स्मगलिंग करूचंदी चाउल माछ ये सब रो स्मगलिंग होउची बांग्लादेश रो इंडिया रो बांग्लादेश है ना ये सब पॉइंट लिखा हबो हे जीवो नेक्स्ट हाउ डू गूगल और एनी अदर सॉफ्टवेयर बेस्ड मैप वर्क्स ऑन व्हाट बेसिस दे सजेस्ट शॉर्टेस्ट और लेस्ट कंजेशन रूट्स तो एटा को बेसिस रे जोडा गूगल मैप गुडा को देखो ना गूगल मैप को अनुसार काम करूची गूगल मैप टा तुमरो कोऑर्डिनेट्स बेसिस रे काम करे इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स मींस जोडा तुम x और y एक्सिस देखुतो बा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पोचे x y एक्सिस बा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कांसेप्ट ऊपर ये काम करूची बुझी होची कि नहीं तो ये को बेसिस रे तुमको दउची वन व्हाट बेसिस सजेस्ट शॉर्टेस्ट और लेस कंजेस्टेड रूट्स को बेसिस रे दउची ना जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करची टेक्नोलॉजी कोन ना टेक्नोलॉजी यूज्ड इज जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग आरएस एंड जीआईएस टेक्नोलॉजी रो ना लिखे पड़िबो एटो तो गूगल मैप हरिका देखछो से केमती चलची क्वेश्चन है हां इमिग्रेशन भी हे परिबो इमिग्रेशन भी हे परिबो बुझेला सो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड हियर ये टेक्नोलॉजी गुडा कर ना लिखे पड़ियो तुमको ये गोटा कीवर्ड भीतर सब आसी दिस कम अंडर द कीवर्ड्स नेक्स्ट डिस्कस स्ट्रक्चर एंड की प्रायोरिटीज ऑफ ओडिशा स्टेट बजट व्हाट एक्सटेंट डज बजट रिफ्लेक्ट स्टेट सोशल डेवलपमेंट गोल्स इन व्हाट वेज डज इट डाइवर्स फ्रॉम देम नाउ सिंपल क्वेश्चन ना एटी कोन लिखिबा ना ओडिशा बजट रो को प्रोविजन को हमको लिखिबार अछि को प्रोविजन हाइलाइट करिवार अछि ना हेल्थ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट हेल्थ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट डिस्कस स्ट्रक्चर एंड की प्रायोरिटीज ऑफ ओडिशा स्टेट बजट स्ट्रक्चर ऑफ प्रायोरिटी रे देखियो कोन रेवेन्यू माने की प्रोविजन एटी कोन लिखियो तुम गवर्नमेंट रेवेन्यू गुडा का एक्सपेंडिचर गुडा गवर्नमेंट रेवेन्यू आ एक्सपेंडिचर गुडा को एटी लिखा हबो सब हैला गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एवं फिस्कल डेफिसिट केते एवं फिस्कल डेफिसिट केते ए पॉइंट सब लिखा हबो these are the points to be discussed हे जीवो लिखियो now first लिख परियो budget is all about the government revenue and government expenditure
तापर आसबे ओडिशा बजेट को टोटल आउटले केते ओडिशा बजेट रो कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट फिस्कल डेफिसिट केते लिखिबे तापर ओडिशा बजेट रो आसबे स्पेसिफिकली से पचारला ना एठी सोशल डेवलपमेंट पार्ट सोशल डेवलपमेंट माने हेल्थ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट गोल्स कोन हेल्थ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट गोल्स कोन डेमोग्राफिक डिविडेंड रे कोन तार हाउ टू यूटिलाइज द डेमोग्राफिक डिविडेंड कोन मेंशन हो एठी मेंशन हो हाउ टू यूटिलाइज द डेमोग्राफिक डिविडेंड को केमती यूटिलाइज करा जो एतिक नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन व्हाट इज हु इज अ मनी म्यूल कहले कौन बुझ हाउ डज दिस हैपन एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस व्हाट एक्शंस आर बीइंग टेकन बाय आरबीआई सजेस्ट सम रिमेडियल मेजर्स टू कंट्रोल इट ताले एटी कौन लिखिया मते कोन फटाफट कौन लिखिबा एटी कोन फटाफट देखिन बेले बेले म्यूल अकाउंट्स को जाय गोटे म्यूल अकाउंट कोन ना ये गोटे इंडिविजुअल हु ट्रांसफर्स कौन ट्रांसफर करछ who transfers on behalf of criminals और मु कभी क्राइम प्रोसीड्स हैला knowingly और unknowingly जानी की बा न जानी की knowingly और unknowingly जानतरे बा अजानतरे हाँ सब एग्जाम एक्सप्लेन करिया पड़े विथ एग्जांपल जते एग्जांपल दबो डाटा दबो सेते बेटर मनी म्यूल किए मनी म्यूल अकाउंट मु कहली मु जानतर बा अजानतर क्रिमिनल प्रोसीडिंग गुडा को गोटे क्राइम प्रोसीडिंग गुडा को मु तो ट्रांसफर करछि अकाउंट रे ट्रांसफर करछि ताको कहजे मनी म्यूल्स मनी बा म्यूल अकाउंट बोली मु अकाउंट कहजे म्यूल माने कोन गध किछि जणा नहीं से ट्रांसफर करि चलछि खाली या तो किछि जणा नहीं से मनी माने जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग ताको ट्रांसफर कर चलछि गुडा एठी लिखिबे मनी म्यूल ऊपर सो हाउ डज दिस हैपन एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंस कोन कॉन्सिक्वेंस हला तुम्हारा अकाउंट फ्रीज कर दबो कॉन्सिक्वेंस कोन एठी कॉन्सिक्वेंस अकाउंट फ्रीज सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को जाई पारे बा कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को जाई पारे हला जदी एठी मनी लॉन्ड्रिंग हेतिबो ताले ईडी पाकू कथा जाई पारे अरेस्ट करा जाई पारे बा क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हेई पारे गम अगेंस्ट रे कोन हो ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हेई पारे बुझिला ए सब जिंस हेई पारे ना सजेस्ट सम रिमेडियल मेजर्स कोन करा जाई परियो सजेस्ट सम रिमेडियल मेजर्स कोन करा जाई परियो ना मोस्ट इंपोर्टेंट रेमेडी इज अवेयरनेस क्रिएशन करि पारि मनी म्यूल एवं लीगल अवेयरनेस क्रिएशन लॉ ऊपर नॉलेज देबे कि मनी म्यूल हेले कोन हुए व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस कोन इंपैक्ट पड़ियो ये सब जानै परियो नेक्स्ट डिस्कस द रोड मैप फॉर विकसित ओडिशा फॉर विकसित भारत इट्स कोर गोल्स स्ट्रेटजीज कोर पिलर्स फोकस एरिया टारगेट्स ना ये गुडा पूरा पूरी डिस्कस है बजेट क्लास रे डिस्कस करथले क्वेश्चन टी पढ़ले 14 नंबर क्वेश्चन टी समस्त देखंतु हबो 14 नंबर क्वेश्चन हबो ना कहयो पड़ियो डिस्कस रोड मैप फॉर विकसित भारत एंड विकसित ओडिशा हम कि नहीं कौन स्ट्रेटेजी थिला स्ट्रेटेजी सोशल सेक्टर डेवलपमेंट हेल्थ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट प्लस एक्सपोर्ट इंपोर्ट रे कोन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रे कोन सब एस्पेक्ट गुडा को एठी लिखिबा पई पड़िबो बुझिला कि नहीं सब एस्पेक्ट गुडा को एठी लिखा हो विकसित भारत विकसित ओडिशा हले ही विकसित भारत हो विकसित भारत ओडिशा हले ही विकसित भारत हो
Shanti Act 2025, its objectives. Shanti Act is related to recent. देखो current affair based question से कितने पचारी, कितने current affair based question पचारी. Shanti Act कौन? Sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India. Nuclear energy for transforming India. ये तार objectives, provisions and concerns पचार. ये 1962 जो थिला तुम्हारा Atomic Energy Act 1962, Atomic Energy Act 1962 was replaced by the Shanti Act 2025. ये कुछ private sector foreign investment. कौन लिखो? Private sector foreign investment, private sector foreign investment, liability framework ऊपर डिस्कस करूची. এই পয়েন্ট উপরে কোশ্চেন তো আনসারটা রিভলভ করিয়া দরকার. লায়াবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক কোন রহিব এটি? রেগুলেটরি আপগ্রেডস, পেনাল্টি কোন রহিব? রেগুলেটরি আপগ্রেডস. जो पॉइंट उडा लिखिबे अब हैला. Yes, privatization of atomic energy sector. Next, the easing of sulfur emission standards for coal-fired power plants represent a significant rollback of environmental regulation. Critically evaluates its impact on India's air quality goals, climate commitments, environmental justice, particularly in vulnerable and marginalized regions. बहुत बढ़िया क्वेश्चन. नाउ क्लाइमेट जस्टिस ऊपर गोटे टॉपिक मु सब डिस्कस करे. देखो एटी क्वेश्चन आसला, कहितली क्लाइमेट जस्टिस ऊपर आसीबो क्वेश्चन. एथर एनवायरमेंटल जस्टिस ऊपर क्वेश्चन आसीबो. से पचारला देखो तुम क्लाइमेट जस्टिस ऊपर क्वेश्चन. ना अर्बन एरिया अधिक क्लाइमेट चेंज करूची, तार इंपैक्ट कहा पर अधिक पड़ुची ना रूरल एरिया ऊपर इंपैक्ट अधिक. कहा पर इंपैक्ट अधिक ना रूरल एरिया ऊपर. तो एई लाइट रे आंसर गुडा को सब लिखा हबो. बुझियला कौन कहूची? को लाइट रे लिखियो आंसर ना सल्फर एमिशन स्टैंडर्ड टा केमिति एनवायरमेंटल रेगुलेशन नो मिस माने एनवायरमेंटल रेगुलेशन टा को मानुन. एनवायरमेंटल रेगुलेशन केमिति करा जाई परियो, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट दिरा जाको डिस्कस करियो. लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस रोल ऑफ माइक्रो इरिगेशन इन इंक्रीजिंग वाटर यूज एफिशिएंसी. माइक्रो इरिगेशन टा होची तुम्हारा स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन ऊपर एटी डिस्कस हो. स्प्रिंकल इरिगेशन, स्प्रिंकल एंड ड्रिप इरिगेशन ऊपर एटी डिस्कस करियो. बुझियला most important point. How do you relate the changes in cropping pattern with the development of irrigation system in country? Cropping pattern भी change होउछ, commercial agriculture practice होउछ, जोडा का रेन फेड फार्मिंग होतला सेडा कबे कोन रेन जोडा तुम इरिगेशन लेड फार्मिंग होउछ. इरिगेशन लेड फार्मिंग होउनी की तो सेठी से जगह रे इरिगेशन नो इंपैक्ट कोन. बट एई दीटा पॉइंट स्प्रिंकल ड्रिप इरिगेशन आ प्रिसिशन एग्रीकल्चर ऊपर एटी लिखिया पड़े. तीनटा चारटा पॉइंट को कनेक्ट करके लिखिए. प्रिसिशन एग्रीकल्चर एगुडा सब मिसई की लिखा हुआ आंसर. अब क्लियर. जीएस3 देखो बुझियला. जीएस3 ऊपर क्लैरिटी आसिला कि नहीं? जीएस3 ऊपर क्लैरिटी आसिला लिखि परिबे समस्ते. जति क्वेश्चन डिस्कस हला हबो. एसे कोन अछि कहि दोछि. एसे कोन अछि कहि दोछि. Freedom is not mere absence of restraints. Gender is a social construct. Visibility is mistaken for values. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. The sun is new each day. देखो philosophical essay टिका अधिक पके देला. बट एठी मु कहूची बेस्ट essay केमति चूज करिवे. क्लाइमेट एनवायरनमेंट रिलेटेड essay को प्रथमे चूज करियो सबले. कोन कहले क्लाइमेट एनवायरनमेंट रिलेटेड जद अछि केटी किछि एटी क्लाइमेट रिलेटेड essay किछि रहिलानी तो ना क्लाइमेट रिलेटेड किछि रहिलानी. तो जदी नाही ताले सेकंड चूज करिवे जस्टिस पॉलिटिकल essay जदी किछि थिवो. जस्टिस पॉलिटिकल इकोनॉमिक essay. न देखो एटा फ्रीडम इज नॉट एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट एला पॉलिटिकल essay. इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर. ये हला ई दिटा essay लिख परिवे हला. आ सोशल essay एटा हला सोशल essay. जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट. एटा हला कोन कहली फ्रीडम. एटा हला पॉलिटिकल essay.
एटा हला पॉलिटिकल और ये दीटा हे गला कोन तुमरो ना एगुडा फिलोसॉफिकल ये गले फिलोसॉफिकल एसे ना फिलोसॉफिकल टाकू मु एडवाइस देबी फिलोसॉफिकल एसे न लिखिया पई इफ यू आर वेरी स्ट्रांग इन फिलोसॉफी if you are a student of philosophy or if you have a good grip over philosophy then write it otherwise I will advise not to write any philosophical essay otherwise I will advise not to write any philosophical essay ताले एठी मोर ऑप्शन मु एडवाइस करबी लिखिया पई 1 नंबर 4 नंबर डजंट मीन कि तुम से ही लिखिबो मु कहबा को चाहूची कि कोन लिखी बेटा गोटे आइडियल कैंडिडेट कोन लिखिबे तो जनकर मनकर भल फिलोसॉफिकल एसे से लिखि से कहीं लिखिबो से लिखिबो जने सोसाइटी सोशियोलॉजी पिला से जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट लिखिबो सो मोर प्रेफरेंस रहबो 1 2 3 4 5 कोन कहली कोन लिखिबे मु प्रेफरेंस कोन देली मु प्रेफरेंस एडाला 1 सेकंड प्रेफरेंस इनजस्टिस थर्ड प्रेफरेंस सोशल जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्ट 4 नंबर रे विजिबिलिटी इज मिस्टेकन फॉर वैल्यूज 5 नंबर रे सन इज न्यू इच डे एडाला मो हिसाब रे लिखिबाटा उचित तो तुम चेंज करी लिखि पारिबो सेमति किछि माने नै बिकॉज़ एटा सब्जेक्टिव तले एटी एसे रे केमिति लिखा जाय मु डिस्कस करूने सबुर कोन आंसर कहबी कि कोन हो आंसर बहुत समय लागियो पाइ तले एई वे रे चूज करिवे एसेटा को लिखिया पई हैला दीटा एसे लिखिया पड़ियो तुम 125 गुणन 2 दे देना ना 1000 रु 1200 शब्द विशिष्ट दुईटी प्रबंध लेख प्रत्येक प्रबंध मार्क सामना प्रथम प्रबंध पृष्ठा 4 रु द्वितीय प्रबंध पृष्ठा 15 रु लेख सो एतिकी 9 पेज ही अछि तुम पाखे ताटू अधिक यू कैन नॉट राइट ताटू अधिक तुम लिखि परिबो नाही हैला त लिखियो जेमति कहतली इंट्रोडक्शन कोटेशन नु स्टार्ट करबी तो ऑलरेडी कोटेशन रिलेटेड गुडा कहीं सब देइछि कोटेशन नु स्टार्ट करि परिबो कोटेशन फोटेशन नु लिखियो कोटेशन नु लिखि परिबो देन की कोन कहिले कहितली जेमति ऐसे लिखा जाय ऐसे क्लास रे डिस्कस करबी केमति ऐसे लिखा जाय इंट्रोडक्शन लिखिबो बॉडी पार्ट रे एनालिसिस ऑफ सेल्फ एनालिसिस ना सबुट इंपोर्टेंट एसे रे कोन देखा जाय ना आइडिया फ्लो तुम आइडिया टा केमति फ्लो करूछ को वे रे आंसर लिखुछ कोन कहले आइडिया फ्लो केमति करूछ गोटे पैराग्राफ रो आ गोटे पैराग्राफ को लिखिला बेले केमति जंप करूछ आर्बिट्रेरीली जंप करूनो तो माने सिलेक्टिव वे रे जंप करूछ तो ए जिंस गुडा को एठी एसे रे मेंशन हवा दरकार दिस इज हाउ यू शुड राइट यदि किछि पचारिबे पचारन फ्रॉम टुडेस डिस्कशन एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेस डिस्कशन गोटे ओवरऑल क्लैरिटी आसिला गोटे ओवरऑल क्लैरिटी आसिला कहा पर जीएस 3 रे कोन लेखा हबो एवं एसे पेपर रे कोन लेखा जिवो केमति लेखा जिवो ना एबे बुझा पड़ुची एटलीस्ट क्लैरिटी आसु जो माने नेक्स्ट ईयर बा ता नेक्स्ट ईयर देबे ना ओएस परीक्षा पूरा डिफिकल्ट लागुची प्रीलिम्स पूरा डिफिकल्ट मेंस पूरा डिफिकल्ट आफ्टर ऑल you have to write I am a catalyst I can facilitate your preparation you have to speed up your preparation this is the very individual plan बुझिला any question मेंस रे कॉन्फिडेंस आसीओ धीरे धीरे आसीओ ऐसे टिके प्रॉब्लम हबो लिखिले हबो डाटा सब पढिया पड़ियो बारंबार पढिले लिखिले मन रहयो डाटा गुडा सब पढिले लिखिले बारंबार मन रहयो
ठीक अच्छे दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन देन जाओ जहाँ देखिए पुणी नेक्स्ट क्लास डिस्कस करिया ठीक अच्छे ये पढ़ी के आस जहाँ देखिए आज कौन डिस्कस कले GS3 एसे that's all for this session thank you good night